एडमिनिस्ट्रेशन आपका, पुलिस आपका, और फिर भी काम मैं नहीं चैलेंज होता। कर रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं जवाब क्या आप नाम बताएं कौन जज को धमका रहा है? जो अभी इन्होंने जज साहब का नाम लिया कि ये उसका परिवार से डर के बारे में पूछिए साहब, क्या डर है? जो स्टेटमेंट मैंने उनके परिवार के सुने टेलीविजन पे, वो तो बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं, किसी भी चीज से नहीं डर रहे, किसी को भी आरोपित नहीं कर रहे। शर्म आनी चाहिए परिवार से भी नहीं। अच्छा, शोएब जमाई जवाब बोल रहे थे तो अनिला सिंह नहीं बोली। मस्जिद में, ज्ञानवापी मस्जिद में क्या हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे शो पर कानून चलेगा। अब आप चुप रहेंगे। अब आप चुप रहेंगे। नहीं, अब आप चुप रहेंगे। केवल पैनल कराने की जिम्मेदारी सरकार की, ठीक है, प्रशासन आपके अब अनिला सिंह जवाब देंगे। अब आप चुप रहेंगे। जज डरता है, फेडर डाउन कीजिए, कानून फेडर डाउन कीजिए। शोएब जमाई अब चुप रहेंगे। शोएब जमाई अब आप चुप रहिए। केवल अनिला सिंह बोलेंगे और अनिला सिंह आप बोलिए। फेडर डाउन कीजिए अब शोएब जमाई का। प्रशासन जो फेलियर हो रही है, यहाँ पर गुंडागर्दी नहीं होगी। जवाब दीजिए अनिला सिंह। फेलियर नहीं हो रही है डॉक्टर जमाई। आप जैसे लोग जो उद्दंडता करते हैं ना, वो लोग खौफ खाते हैं भगवा सरकार से। भगवा में वो ताकत है। आप लोग वो लोग हैं, यहाँ पर एक षड्यंत्रकारी जो सरकारें बनी हुई हैं, जिन लोगों ने 50 साल यहाँ पे राज किया है, भगवा को आतंकवाद बना दिया था। भगवा रंग ही जो है आतंकवाद का बनाया हुआ था। ये तो मैं कहूंगी 50 साल का जो कुकर्म रहा है, 2014 से इस भारत की किस्मत बदली है। ऐसा प्रधानमंत्री आया जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ देश को आगे बढ़ाना चाहता है। But the people like you who want to instigate, who wants to disturb the harmony and peace of the state and the country, they won't be pardoned, they won't be spared. And if I talk about Gyanvapi, अगर वहां पे हम बात करते हैं तो लेक पुराण में मंदिर के मैम इस पर कानूनी कार्रवाई क्या करेगी योगी आदित्यनाथ की सरकार? क्योंकि 6 मई और 7 मई को कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ। कौन है उसका जिम्मेदार, कौन है उसका दोषी? क्या कार्रवाई करेगी आपकी सरकार? यह प्रश्न अभी योगी आदित्यनाथ सरकार के ऊपर अभी ये है। अनिला सिंह जी, इसका उत्तर आपको देना होगा। बट आई एम ऑल्सो ज्वाइंड नाउ बाय राहुल ईश्वर, एन एक्टिविस्ट, एंड राहुल ईश्वर, rather sad that when a learned civil judge has to say that there's an atmosphere of fear being created. His family is concerned about his safety, he's concerned about their safety. The question remains, who's creating this atmosphere of fear? And what action will the law of this land take against such elements, Rahul Ishwar? Please remember, we are a nation with rule of law. As a Hindu activist, I concede it's a very tricky issue. Our Muslim brothers need to understand the sensitivity of Mathura and Ayodhya. These 3 spaces are very holy for Hindu community, and Hindu community has been demanding these spaces for years. Yes, even look at the Ayodhya Babri Masjid verdict. Supreme Court went to a great extent to reassure our Muslim brothers and to find a consensus. See, we Hindus and Muslims should sit together, try for consensus, talk out difficult conversations. Yes, these are difficult conversations, but we need to talk it out so that we can find a consensus. And Supreme Court last time even requested people like Sri Sri Ravi Shankar ji, who's a world-renowned spiritual guru, to initiate conversation and to find some kind of a consensus. And please remember, these 2 spaces. Point you're making, sir. Our father of the nation, Mahatma Gandhi, was pained when he saw the Kashi Vishwanath temple, said, I'm sad about the state of the affairs. That's the reason why modern Indian governments have to read this. Okay, Rahul, Dr. Shoaib Jamai, that's a pertinent point that Rahul Ishwar makes. Consensus, reconciliation, whether it's Mathura, Kashi or Ayodhya, they hold a very special significance for Hindus, as Rahul Ishwar argues. Is there some way that there could be reconciliation and forward movement, or will confrontation remain, sir? Dr. Jamai. See, Gaurav, जब लोग बात करते हैं कि इतिहास की तरफ जाओ, रीराइट द हिस्ट्री करो, डाउन द लेन जाओ, उसमें आप कंसेंसस चाहते हैं। एक रीराइट कैसे कर रहे हैं हिस्ट्री? औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा, ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट है। मैं इसी हिस्टोरिकल फैक्ट की बात कर रहा हूं। आज ही राघवेंद्र शुक्ला ने लिखा है कि भाई 1659 में औरंगजेब ने बनारस के यहां से मुगल जो एडमिनिस्ट्रेटर थे उसको ये फरमान जारी किया कि बनारस के सारे मंदिरों की आप सुरक्षा करें, और 1669 में ये तुड़वा दिया काशी विश्वनाथ का मंदिर। अच्छा, वो भी क्यों तोड़ा ये भी बता देता हूं। क्योंकि औरंगजेब का भाई था शुजा, वो जाकर के मिल गए वहां पे क्या बोलते हैं, एक वहां के जो हिंदू राजा थे, जो मंदिर तोड़ देंगे, जो हिंदुओं की धार्मिक आस्था की जगह है, वो औरंगजेब जैसा क्रूर राजा
मंदिर तोड़ देगा और औरंगजेब ने तोड़ा ही नहीं अपनी भाई। आस्था का मंदिर नहीं मांगेंगे। औरंगजेब ने नहीं तोड़ा, वो शुजा और जो यहाँ से उसके हिंदू राजा की जब लड़ाई हुई वहां पे जंग में और शिवाजी सब साथ में आ गए तो वहां पे स्ट्रक्चर कुछ टूटे हैं और जिसके बाद यहाँ तो से बनने दीजिए मंदिर। अनिला सिंह जवाब दीजिए। दूसरी बात जो इसको रोक रहे हैं, जो इसको आज रोक रहे हैं गौरव जी नहीं सर, आप नया आपको बता दूं डीएन झा एक इतिहासकार लिखते हैं अनिला सिंह आपको जवाब देना चाहते हैं। हजारों मंदिरों को तोड़ा है, लूट का माल लेके गए और इन्हीं हिंदू राजाओं ने, चालुक्य ने, ये अशोका ने जो है कई बुद्धिस्ट स्तूपा को तोड़ करके वहां मंदिरें बना दी। आप उनसे यहाँ से बैठ जाइए, दलितों के साथ, बौद्धों के साथ बैठ जाइए, उनसे संवाद, मतलब आप और को वापस दीजिए। तो शोएब जमाई, आप इस समाज को और तोड़ने की बात करेंगे, नहीं आप जोड़ने की बात नहीं कर सकते। राहुल ईश्वर ने रिकंसिलिएशन की बात की, जो आप नहीं कर सकते। राहुल ईश्वर ओनली राहुल ईश्वर will respond. पेंडोरा बॉक्स है, Is it possible? This is the that Pandora box, leaders never from both ending Pandora Islamic box, and community and these Hindu community nuisance, can sit these together and nuisance talk about it. ideologies should be banned in India itself because it was banned by the Iron Man. Okay, only Rahul Ishwar. Abdul sir, just a humble request. Is it possible that the senior leaders, spiritual leaders from both our community, whether it be Muslim community or Hindu community, along with court and others, can we sit together and solve and talk this issue out? Because what else is the way forward? As I rightly pointed out, Kashi, Mathura and Ayodhya have special significance because these were not merely temples. Beyond temples, these were Janmasthans, these were Moolastans, these were places where Prana Pratishtha was held and deities were born and invoked in a bigger way. There are sentiments of centuries here. So is it possible? Let me take this to Anila Singh. That's a fair point. There's a point that has been raised by Dr. Jamai. Anila Singh ji, how will you ensure, one, rule of law is followed? And Dr. Shoaib Jamai asks, is there a guarantee that after Ayodhya it will remain restricted to Kashi and Mathura in case there's an amicable resolution and will not expand, for example, to Qutub Minar or the Bhodshala at Madhya Pradesh and perhaps 4,000 other such structures that Muslims are accused, Muslim rulers are accused to have broken when they were ruling this country, madam? See, whenever they have to use all the rights, they will start saying that this right is for this thing, this right is, that right is for that thing. But whenever any issue regarding Hindus comes, they start playing victim card. And in today's date, in 8 states, Hindus are in minority. Their population has increased to 20 crores, almost 20 crores, and still they say we are the victims. Nizam is a victim and Bhagwa is a villain. This is what they try to play here.